right, further examples. He spoke so dash that everyone could hear him clearly. अब जाहिर है स्पोक को आपने डिफाइन करना है और वो वर्ड जो वर्ब को डिफाइन करते हैं दे आर नोन एज एडवर्ब. हम सबको पता है इसका मतलब है हमें एडवर्ब चाहिए. लाउड इज नॉट एन एडवर्ब, लाउडर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, लाउडनेस इज अ नाउन. तो जो एडवर्ब है हमारे पास वो एक्चुअली लाउडली है. So he spoke so loudly. In other words, it's very common and easy, and one can easily understand and pick the correct answer. But still, I'm telling you the reasons because the spoke को define करना है, तो इसका मतलब है we need an adverb. और adverb जो word है यहाँ पे मौजूद वो है loudly. Next, 52. The train arrived than expected. यहाँ पे जो word than use हो रहा है, this than indicates that we need a comparative degree. Like, this is bigger than that one. Like, my brother is more intelligent than me. तो आप देख रहे हैं जब आप THAN यूज करते हैं तो we need a comparative degree. Late is not a comparative degree of adjective. Lately is also not a comparative degree of adjective. Latest is the superlative degree of adjective. We cannot use any superlative degree with THA and than. So the comparative degree is later. The train arrived later than expected because than is there. All right, next. The workers demanded a dash increase in wages. यानी एक मुनासिब जो उनकी वेज है यानी जो भी उनका मुआवजा है उसमें वर्कर डिमांड कर रहे हैं एक बेहतर इंक्रीमेंट. तो इस ओवरऑल में अगर आप देखें तो जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है वर्ड वो दरअसल FAIR है क्योंकि ये फेयर यूज नहीं हो सकता. फेयरनेस फेयरली यूज नहीं होगा. FAIR इट मीन्स बेटर. नेक्स्ट 54. She has been living here. एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर की बात हो रही है. ING जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है and we all know that when a present participle form is used it indicates that something or some work is continued. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंटिन्यूटी शो हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम या ड्यूरेशन से 2015 और इसमें हमें प्रपोजिशन यूज करना है. हमें मालूम है होना चाहिए कि जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं एग्जैक्ट टाइम की आप बात करते हैं आप ड्यूरेशन की बात नहीं करते देन यू आर सपोज टू यूज सिंस. सो शी हैज बीन लिविंग हियर ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है. एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया है एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है इस वजह से वी आर यूजिंग सिंस. नाउ 55. द जज गेव हिज डैश आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स. ऑब्वियसली जब आप जजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब एक वर्डिक्ट की बात करते हैं. वर्डिक्ट इज एक्चुअली द जजमेंट एक फैसला एक डिसीजन जो जजेस लेते हैं एंड द करेक्ट आंसर विल बी वर्डिक्ट. ज़ाहिर है मोर देन वन वर्डिक्ट की बात नहीं हो रही. वी कैन नॉट यूज वर्डिक्ट्स. वर्डिक्ट एंड वर्डिक्ट दे आर द मिसस्पेल्ड वर्ड. तो वर्डिक्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ही वॉज एब्सेंट डैश इलनेस जो इसमें एक मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन है. अब ड्यू अगर ड्यू है तो ड्यू के साथ टू होना चाहिए था. बिकॉज ऑफ एक ऐसा प्रपोजिशन या एक कंपाउंड प्रपोजिशन आप कह सकते हैं जो यूज हो रहा है जो कि इस आंसर इस स्टेटमेंट के लिए सूट कर रहा है. ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस. बिकॉज इलनेस ड्यू इलनेस नॉट सुटेबल. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिमेन. साइलेंस नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ नाउन. टू रिमेन साइलेंट adjective आपको यूज करना होगा. To remain silently, silenced, they are not a proper word. 58. The child was frightened by the dash sound of thunder. बहुत easy है. The child was frightened by the dash sound. इसका मतलब we need an adjective जो sound को define करें और adjective जो यहाँ पे मौजूद है वो loud. The child was frightened by the loud sound of thunder. All right. Now number 59. The player was praised for his dash performance. अब आप देखें यहाँ पर outstanding and outstanding इस तरह हम पहले भी कर चुके हैं. Standing out, stand out, they are not correct. Now here raises a question which one is correctly written. The first one outstanding or the second one with hyphen.
अभी हमने डिस्कस की कि जब दो वर्ड्स को एज ए कंपाउंड एडजेक्टिव आप यूज करते हैं, वी नीड अ हाइफन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द प्लेयर वाज प्रेज्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. Okay. Now number 60. She completed the work than her classmates. अब आप देखिए यहाँ again than word use हुआ है और than एक comparative degree को require करता है, यानी than आप उसी वक्त use करते हैं जब you need a comparative degree. तो she completed the work. अब इसमें comparative degree क्या है? Quicker. So she completed the work quicker than her classmates. All right. Now number 61. Dash is a great virtue. अब an honesty, a honest, honest and honesty मौजूद है. We need a noun. तो noun में honesty ही है. अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप honest या honesty की आप बात कर रहे हैं, they are the abstract noun. Abstract noun का मतलब है कि they are the immaterial noun. And when you talk about immaterial noun, we do not need any article, definite or indefinite article. तो an honesty is not a suitable answer क्योंकि honesty और an honesty से हमें decide करना है. तो honesty is an abstract noun that cannot be counted. It is not a material noun, so we cannot add any article. बजाय तो ऐसा लग रहा है कि भी honest है, उससे पहले आप an लगाते हैं, indefinite article use करते हैं, तो जहन में एक question या एक बात आ सकती है कि भी honesty से पहले an लगा हुआ है, that will be correct one. No. Honesty is an abstract noun. We cannot use any indefinite article. So the correct answer will be honesty is a great virtue. Next, number 62. Our dash objections finally got thrown out of the examination hall. किस तरह का objection था? Suspicious, doubtful, silent, modest. ये सूट नहीं कर रहा. Vocal objections, यानी जो आपने articulate किया है, जो आपने बोला है. Vocal is the correct answer. An editorial praised the generosity of an anonymous who had donated over ₹1 million and several priceless books to the college. अब आप देखिए इसमें दोनों ही हमें बेहतर लग रहे हैं, डोनर भी और बेनिफैक्टर भी. जब आप किसी इदारे की बात करते हैं और जब आप किसी एक ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जिसमें कोई पर्सन जो फुल फ्लेजेडली एक बहुत बड़ी आप यूँ समझ लें एक ह्यूज अमाउंट या एक ह्यूज पार्ट डोनेट कर देता है किसी इदारे को, इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, किसी भी इदारे को, तो डोनर से ज़्यादा बेहतर होता है बेनिफैक्टर, यानी डोनर से ज़्यादा बड़ा बेनिफैक्टर है. तो बेनिफैक्टर विल बी अ सुटेबल वर्ड. ऑलराइट. 64. The committee praised his dash support during the entire project. Very easy. The committee praised his dash support. You need an adjective जो कि support को define करे. तो the committee praised his generosity, generation, general, irrelevant answer. Generous is the correct answer. The committee praised his generous support during the entire project. Generous will be a correct answer. The lawyer presented a dash case supported by strong documentation. यानी कैसे केस की बात की जा रही है? जो persuasive थी, जो compelling थी, यानी compelling will be the correct answer. Complex और strong documentation that does not suit. Compelling का मतलब है यानी केस के साथ आमतौर पे ये वर्ड यूज होता है कंपेलिंग, यानी जो परसुएसिव हो, जिसको परसुएड किया जा सके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशंस के साथ. तो कंपेलिंग इज मच बेटर वर्ड. द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो दैट इवन बिगिनर्स अंडरस्टूड इट. एम्बिग्यूअस, ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नॉन प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल बेस. यहाँ पे जो सबसे इजी और बेहतर वर्ड लग रहा है वह लूसिड. लूसिड का मतलब है इजी, और ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे मौजूद है उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो लूसिड, यानी सो इजी, सो क्लियर दैट इवन बिगिनर्स अंडरस्टूड इट. ऑलराइट. द एग्रीमेंट वाज डैश आफ्टर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस. द एग्रीमेंट वाज very easy. The most suitable answer, finalized. Next, 68. His dash behavior in meetings often annoyed his colleagues. Often की बात हो रही है, यानी regularly ऐसा होता है.
और एक ऐसे बिहेवियर की बात हो रही है जो उसके कॉलीग्स को एनॉय करता है, रिजिडिटी क्रिएट करती है। ज़ाहिर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक या अर्नेस्ट, ये सब पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। इरेटिक एक ऐसा बिहेवियर है जो कि इरेगुलर बिहेवियर की बात हो रही, कभी कुछ इरेगुलर बिहेवियर यानी इरेटिक बिहेवियर इन मीटिंग्स ऑफन एनॉयड हिज कॉलीग्स, ये नेगेटिव मीनिंग की तरफ जा रहा है और ये सही है। 69 The project was abandoned due to dash funding. Abandoned यानी stopped, ruined छूट गया, छोड़ दिया गया। Very easy answer. Insufficient funding. Insufficient की वजह से project abandoned हो गया, छूट गया, incomplete रहा। The system requires dash monitoring to avoid failure. Absolutely very easy answer. यानी avoid failure, failure से बचने के लिए सिस्टम को क्या चाहिए, किस तरह की मॉनिटरिंग चाहिए? ऑब्वियसली एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए। कांस्टेंट डज साउंड बेटर। 71 द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन क्रिएटेड अ डैश इन लीडरशिप। वॉल्यूम, वर्चू, वर्जन बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। वैक्यूम जिसके मीनिंग स्पेस के हो सकते हैं, खला के हो सकते हैं, और ये आंसर सूट भी कर रहा है जो एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करें तो वहां। The strategy proved highly, अब highly एक पॉजिटिव सपोर्ट है तो डिफेक्टिव तो नहीं हो सकता। रिफ्लेक्टिव एंड सिलेक्टिव बिल्कुल वोकैबुलरी सूट नहीं कर रहा है। The strategy proved highly effective, यानी highly effective का मतलब कि पॉजिटिव आंसर यहाँ पे मिल रहा है। Alright, 73 को देखें। He is Dash University professor known for his research in linguistics. अब बजाय तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग विद द लेटर वाउल, यानी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट एवरीबडी नोज यूनिवर्सिटी में जो वर्ड लेटर यू है इज नॉट गिविंग यू अ वाउल साउंड। आ, ए, ई, ओ और इस तरह के और भी साउंड्स हैं, दे आर जनरली नोन एज वाउल साउंड। सिंस इट इज नॉट गिविंग यू अ वाउल साउंड वी कैन नॉट यूज एंड विद इट। प्लस ये कि प्रोफेसर क्योंकि काउंटेबल है, कॉमन है, सिंगुलर है। नाउन क्योंकि काउंटेबल, कॉमन और सिंगुलर है, और जो यहाँ पर भी जो नाउन आपको दिया गया है वो यूनिवर्सिटी, ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वाउल साउंड नहीं दे रहा है। आ, ए, ओ, ई की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए वी कैन नॉट यूज एंड विद इट। द मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर known for his research in linguistics. Now 74. She returned after dash hour long meeting with the committee. An hour long. अब यहाँ पे अगर आप आर की बात करें तो अब आप देखिए ये आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आ साउंड का मतलब है इट इज गिविंग यू अ वाउल साउंड। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो आपको सेंस मिल रहा है, शी रिटर्न्ड आफ्टर 1 hour लॉन्ग मीटिंग, तो 1 इज नॉट गिवन इन ऑप्शन ए एंड द है। 1 का आपने सेंस देना है। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस ए और एन। अब क्योंकि आर में जो एच है ये वाउल साउंड क्रिएट कर रहा है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एड ए। द मोस्ट सुटेबल आंसर for this statement will be N. She returned after an hour long meeting with the committee. 73, यहाँ पे एक preposition है, the manager insisted strict compliance with the rules. तो insisted के साथ आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, the manager insisted on, यानी word insisted के साथ आपको वर्ड लगाना पड़ेगा ऑन। जिस तरह कंसिस्ट के साथ आपको एक प्रपोजिशन लगाना होता है ऑफ, उसी तरह इंसिस्ट के साथ आपको लगाना होगा ऑन। ऑलराइट, नाउ लुक एट 76। ही इज कैपेबल, और कैपेबल के साथ जो एक फिक्स प्रपोजिशन है जो आप यूज करेंगे वो ऑफ। He is capable of handling complex legal cases. Preposition के साथ प्रॉब्लम ये है कि some particular word के साथ आपको particular preposition ही यूज करने होते हैं। Like burst है, उसके साथ आप into लगाएंगे, satisfied है, उसके साथ आप with लगाएंगे, die है, उसके साथ आप off लगाएंगे, consist है, उसके साथ आप off लगाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो preposition insisted on यूज होगा, capable of यूज होगा, तो इसकी preparation fixed preposition के तौर पे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब आमतौर पर तो हमें अंदाजा ये हो रहा है कि स्पेस से पहले कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, वी शुड गो विद वर्ब, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि देयर आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस, दे आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर, लाइक नीदर, ईदर, ईच, एवरी, समवन।
इस तरह के प्रोनाउंस, सोलो, इस तरह के प्रोनाउंस अगर सेंटेंस में मौजूद है, द होल सेंटेंस विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो अब यहाँ पे है नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे नीदर सेंटेंस में यूज हुआ है एज अ सोलो, यानी नीदर के साथ नॉर मौजूद नहीं है, तो वी शैल कंसीडर द होल सेंटेंस एज सिंगुलर। तो नीदर के साथ आप यूज करेंगे नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, वी शैल टेक दिस सेंटेंस एज सिंगुलर, तो इसके साथ यूज होगा एज, क्योंकि जो सिंगुलर को सपोर्ट करने का वर्ब यहाँ पे मौजूद दिया, यहाँ पर जो मौजूद है वो इज है, तो नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। नेक्स्ट 78, द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश बिन मिसप्लेस्ड। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा एक कंफ्यूजन है, स्पेस से पहले देख रहे हैं आप आइटम्स है, वी आर नॉट सपोज टू फोकस है, क्योंकि सच ए स्ट्रक्चर जो ऑफ जहां पे मौजूद होता है, आपको उससे पहले वाले स्ट्रक्चर को देखना है वो सिंगुलर है या नहीं। तो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट्स नहीं है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ सिंगुलर। तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स, अब सिंगुलर के लिए जो मोस्ट सुटेबल वर्ब है वो हमारे पास हैज है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स हैज बीन मिसप्लेस्ड। ऑलराइट, टेंसेस से रिलेटेड है कुछ। By the time we reached the station, अब आप देखिए ये जो क्लॉज आपको दिया गया है, by the time we reached the station, ये एक पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो सच ए स्ट्रक्चर जिसमें आपको दो स्ट्रक्चर पास्ट के दिए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और कंडीशन ये होती है कि सेकंड पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो by the time we reached the station, ये वाला जो क्लॉज है इसको फिर ज्यादा बेहतर है कि इसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाए। पास्ट परफेक्ट के लिए जो बेटर ऑप्शन है वो हमारे पास had left है, यानी by the time we reached the station, the train had left will be the suitable answer. Okay, now let's have a look on number 80. She dash in his company since 2015. देखिए, वैसे जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, वर्क्स है, इज वर्किंग है, हैज बीन वर्किंग एंड वर्क, and everybody knows that continuous sentences are of two types, one with time and duration and the other that is very simple. For example, if I say I'm reading a book, it is a simple continuous. But if you want to say I'm reading a book since morning, so it will be incorrect, because now this is that sort of continuous where the time and duration is also involved. So in that situation, in that case, आप ये नहीं कह सकते कि she is working in this company since 2015, because 2015 is a point of time जो आपको ये बता रहा है कि a work is continued and since when. तो इस तरह की situation में we know the formula that we need to use has been, have been, had been, these sort of structures. तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें, it is a continuous structure, the sentence is giving you a sense that a work is continued since 2015. एक point of time यहाँ पे मौजूद है। तो we cannot add works, we cannot add is working, we cannot add work, बल्कि we need to use has been working. So such a continuous structure where the time of the duration is also mentioned, then we need to use has been, have been, had been, will have been according to the tense and the sense. Now let's have a look onto 81. If he harder, he would have passed the exam. Since you know the conditional sentences, you can easily infer that this is the conditional structure of conditional type 3. और जो conditional type 3 का structure है उसमें आपको मालूम है कि would have passed का मतलब है कि जो if के साथ स्ट्रक्चर है या when के साथ जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, if you work hard you will pass the exam, if you worked hard you would pass the exam, if you had worked hard you would have passed the exam. तो इसका मतलब है कि if के साथ, if का जो क्लॉज है उसके साथ जो स्ट्रक्चर आना चाहिए वो had वाला आना चाहिए। तो क्या होगा ये, if he had studied, if he had studied harder he would have passed the exam. So this is conditional type 3 and conditional type 3 का structure यही है। और आपने कैसे पहचाना, because in the second clause, in the second part would have और past participle यानी third form of verb मौजूद है, तो हमें अंदाजा हो गया कि जो first clause है उसके साथ had और had के साथ past participle होना चाहिए। Now number 82, it is also one of the conditional structure.
if it rains tomorrow, and this is conditional type 1, ये बिल्कुल ऐसे ही है, if you work hard you will pass the exam. if you work hard इसका मतलब है जो first clause है वो present simple tense में, और second clause जो है वो future में, या जो modal verb का जो first structure है वो होना चाहिए. तो if it rains tomorrow we dash the match, we cancel the match नहीं हो सकता because we need a future simple tense. या कोई ऐसा मॉडल वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म का हो, जैसे यहाँ पे विल मौजूद है तो इसका मतलब है हमें विल वाला स्ट्रक्चर चाहिए. यहाँ कैन भी हो सकता था तो हम कैन वाला स्ट्रक्चर लेते, कुड वाला नहीं लेते. आप देखिए ना कंडीशनल स्ट्रक्चर 1 क्या है, इफ यू वर्क हार्ड you will pass the exam. If you work hard, you can pass the exam. If you work hard, you may pass the exam. यानी will की जगह कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है जो उसकी फर्स्ट स्टेट में. तो यहाँ पर जो suitable structure है, if it rains tomorrow, we will cancel the match. Because if the first clause is given in the present simple, the second part will be with the first modal verb structure. In other words, आप कह लें जो given structure and options है कि जो simple future tense है उसमें. Alright, ये एक article based structure है. He has dash unique opportunity to study abroad. अब ये जो unique word है adjective है, और अगर आप unique पे गौर करें तो though it starts with a vowel but it is not giving you a vowel sound, जो कि इससे पहले मैं बता चुका हूं कि vowel sound की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी कि to check whether the given word is giving you a given letter is giving you the vowel sound or not, आप देखें वो आ की आवाज आनी चाहिए, ए की आवाज आनी चाहिए, या ई की आवाज आनी चाहिए, या ओ की आवाज आनी चाहिए. ये बेसिक वावल साउंड्स है. वैसे तो मोर देन दैट है. तो अगर हम यू लेटर को देखें तो इट इज नॉट गिविंग यू आ साउंड. अगर ये आ साउंड देता तो अनीक हम इसको पढ़ते. नीदर गिविंग यू ओ साउंड, ना ओनीक पढ़ते. इट इज गिविंग यू यू साउंड, एंड यू इज नॉट अ वावल साउंड. And since it's not giving you a vowel sound, we cannot add indefinite article an. हम इसके साथ an नहीं लगा सकते. जो most suitable indefinite article use होगा वो a है. He has a unique opportunity to study abroad. Next, ये preposition based है. The accused was charged dash theft. अगर किसी क्राइम के साथ चार्जिंग की बात हो रही है, then you are supposed to use preposition with. और अगर किसी सर्विसेज के हवाले से चार्ज की बात हो रही है, जैसे चार्ज डैश पार्किंग, तो फिर प्रपोजिशन आपका चेंज होगा. देन यू नीड टू यूज फॉर. अब क्योंकि थेफ्ट की बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है, किसी क्राइम की बात हो रही है, देन यू नीड टू यूज चार्ज के साथ प्रपोजिशन विद. सो द करेक्ट आंसर विल बी द अक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट. ऑलराइट, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्टेटमेंट है. The quality of the products dash improved significantly. अब पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, such a compound structure that involves of. Of के स्ट्रक्चर में आपको ये नहीं देखना होता है कि उसके बाद क्या मेंशन है, बिकॉज एक जनरल कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई स्पेस से पहले प्रोडक्ट्स है, वी नीड टू यूज अ प्लूरल वर्ब. नो, आपको ये देखना है कि ऑफ से पहले का स्ट्रक्चर वो सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल. द क्वालिटी की बात हो रही, द क्वालिटीज की बात नहीं हो रही, द क्वालिटी. और इट विल बी टेकन एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर. तो हम सिंगुलर लेंगे, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, और जो सिंगुलर सुटेबल वर्ब है वो यहाँ पे हैज. नेक्स्ट, I dash my homework before the teacher arrived. This is a structure of past perfect tense जिसमें एक clause आपका past simple या past indefinite में होता है, and the leftover clause should be in past perfect. Before the teacher arrived, this is the past indefinite structure. इसका मतलब जो leftover part है ये होना चाहिए past perfect. So what should be the correct answer? I had completed my homework before the teacher arrived, and it will be the correct answer. Now, it is one of the conditional structure. अगर आप देखें 87 को, if I were you, if I were you such a structure, वैसे तो in detail अगर हम पढ़ें तो it is one of the structure that gives you the idea of subjunctive mood. आप इन डिटेल देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं व्हाट इज सबजंक्टिव मूड. लेकिन मैं सिंपल आइडिया दे रहा हूं कि सच अ कंडीशनल, बिकॉज इट इज कंडीशनल टाइप 2 है. वर इज एक्चुअली द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रॉब्लम इज दैट व्हाई इफ आई वर, व्हाई नॉट इफ आई वाज.
I were in conditional type 2, if you desire for something, अगर आप किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, in that scenario, in that case, you need to use the plural verb. यानी अगर आप subject verb agreement के हवाले से भी बात करें कि conditional type 2 में I है यानी प्लोरल ही आपने यूज करना है. यू होगा तब भी वर्ड, आई है तब भी वर्ड, ही है तब भी वर्ड, शी है तब भी वर्ड, अली है तब भी वर्ड. यानी whatever the noun is given, either singular or plural, and you are working on conditional type 2. कंडीशनल टाइप 2 में आप बात कर रहे हैं और एक डिजायर की बात हो रही है तो आई के साथ वर्ब. अब क्योंकि कंडीशनल टाइप 2 है, बिल्कुल इसी तरीके से लाइक इफ यू वर्कड हार्ड you would pass the exam. यानी जो मॉडल वर्ब आप would यूज कर रहे हैं यानी will की सेकंड फॉर्म. कैन होता तो could आप यूज करते हैं, मे होता तो might यूज करते हैं. अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ would है तो we shall go with would. If I were you, I would accept that offer. All right, it is one of the sentence linked with preposition. She is interested. और interested के साथ आप हमेशा preposition लगाते हैं in. She is interested in classical music. All right, 89 is actually based on article honest man. अब यहाँ पे honesty की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक abstract noun की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक noun की बात हो रही है. वो noun है man और उसका adjective दिया गया है honest. अब man is countable, man is common, man is singular. It means that कि हम indefinite article use कर सकते हैं. Now look at the sound. The adjective that is attached with man, वो sound कौन सा produce कर रहा है. अब अगर आप honest को देखें, जैसे मैं vowel sounds, basic vowel sounds मैंने बताए, वो क्या है, a, o and e. तो now look at that, honest. आ की आवाज आ रही, इट मींस ऑनेस्ट इज गिविंग या वाउल साउंड. तो कंडीशन क्योंकि आपसे रिक्वायर कर रही है कि यहाँ पे वी नीड एन इंडेफिनिट आर्टिकल, सो जो बेस्ट आर्टिकल जो सूट कर रहा है वो एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑलराइट, नाउ नंबर 90, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. अब वैसे अगर आप गौर करें ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी, ऑफ से पहले अगर हम देखें तो यह है इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ईच, एवरीवन, समवन, ईदर, नीदर, दे आर नोन एज इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन. या इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर केस में, एंड व्हेनेवर दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सेंटेंस, वी टेक द होल सेंटेंस, वी ट्रीट द होल सेंटेंस एज सिंगुलर. So each of the students, we are not going to focus the students, we are focusing each, and each is inviting you to use a verb that is fit for singular. So each of the students is. So is will be the correct answer, okay? Now, they dashed dinner when I arrived. It is also one of the same structures that we have discussed recently, past perfect. उसमें हम बात कर चुके हैं, but लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है when I arrived. अब आप देखें इसमें पास्ट परफेक्ट का सेंस नहीं मिल रहा है. व्हेन आई अराइव, जब आप पहुंचे तो वहां क्या हो चुका था या क्या हो रहा था, ये सेंस मिल रहा है. तो व्हेन आई अराइव्ड, जाहिर है हैव इज नॉट अ सूटेबल. हैड, they had dinner when I arrived, जाहिर है had is the second form of verb, ये भी past indefinite बन जाएगा, ये भी past indefinite. They are having नहीं हो सकता because one clause is in the past tense, the first one cannot be in the present. जो left over option है वो है were having. One clause of this structure is in the past tense, the leftover part will be in the past form. और जो suitable answer आपको दिए गए हैं और जो best fit answer है वो past continuous का ही है, were having. Alright, if she dash earlier, she would catch the bus. It is the conditional type 2, जो अभी अभी मैंने बात की, like if you worked hard, you would pass the exam. Would catch the bus. Would is given here. इसका मतलब जो first clause है आपका if के साथ, it will take the second form of the verb or the past form of the verb. If she left earlier, she would catch the bus will be the correct answer. Okay. Now 93. She was deprived. Deprived इसका मतलब है किसी चीज से दूर करना, किसी फैसिलिटी से दूर करना. She was deprived और deprived के साथ जो suitable preposition है वो है of. She was deprived of his basic rights. Preposition के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Fixed verb, fixed words have fixed preposition, जिसको आपने प्रिपेयर करना होगा. Alright, it is one of the articles related multiple choice question. Now look at the sentence. Mount Everest is dash highest mountain in the world. Highest is the superlative degree of adjective.
And generally what happens when you are using the superlative degree of adjective, we generally use definite article the with that superlative degree of adjective. Highest is the superlative degree of high, high, higher, highest. And that is why we tend to use the as the definite article with that superlative degree. Mount Everest is the highest mountain in the world. All right, it is once again the subject verb agreement, neither the teacher nor the student. अब आप देखिए यहाँ पे जो neither यूज हो रहा है वो अपने पेयर के साथ है neither and nor. और इस तरह की सिचुएशन में अगर neither सिर्फ अलग होता है यानी ये इस तरह होता है neither the students, तब तो हम लिखते हैं neither the students is present, because neither, either, someone, every, each, they are considered as singular. लेकिन अगर neither के साथ nor आ गया तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट क्या है या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या है. हम ये नहीं देखेंगे कि नीदर के बाद सब्जेक्ट क्या है, हमने ये देखना होगा कि नॉर के बाद क्या है. अकॉर्डिंगली वी नीड, अगर नॉर के बाद प्लूरल है, सब्जेक्ट नाउन प्लूरल है, तो हम वी नीड टू यूज अ वर्ब दैट इज फिट फॉर प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट. तो neither the teacher nor the students, was is not suitable, is भी नहीं होगा, has been obviously नहीं हो सकता, तो ये तीनों नहीं होंगे. Neither the teacher nor the students were present, because neither and nor की situation में you need to focus the noun or the subject that comes after nor or. By next year, future perfect को indicate कर रहा है. By next year क्या हो चुका होगा उस वक्त तक, अगले साल तक. By next year they dash the project, obviously complete नहीं हो सकता, will complete नहीं हो सकता, perfection की indication मिल रही है, will have completed the project. तो by next year they will have completed the project will be the correct answer. If I had known about the meeting, had known conditional type 3 जिसकी अभी हमने discussion की. If you work hard you will pass the exam. If you worked hard, you would pass the exam. If you had worked hard, तो यहाँ पर भी वही आया है. If I had known about the meeting, I would have come, जो कि इसका second clause support करेगा. The book is divided into portions, divided into chapters. So then the fit preposition is the divided into. The book is divided into 3 chapters will be the correct answer. Now 99. It is also related to article. आप गौर करें, degree is a common, countable and singular. इसका मतलब ये हुआ कि we need an indefinite article. Now you have choices either a or an. Now look at the sound. MBA. Again, MBA. When you are pronouncing M, see, focus. कौन सा sound आ रहा है? A, A, O और E का. Focus. MBA, ए की आवाज आ रही. उसी तरह SHO में भी देख लें, ए की आवाज आ रही, SHO. Alright, so yeah, even X-ray में आप देखें, when you are pronouncing X, इसका मतलब है ए की आवाज आ रही है. तो जब डिग्री को देखते हुए हमें ये अंदाजा हो गया कि we need to use indefinite article, now you are focusing on sound, so MBA is giving you a vowel sound, and for this we need an indefinite article an. She has an MBA degree from a reputed university. All right, the last one, a number of students. याद रहे, a number of students and the number of students में slightly difference. When you say a number of students, it means you are indicating plural. And when you say the number of students, it means you are indicating a singular. Yani a number of students या a number of people, whatever the thing is given, a number of students, a number होगा तो it will be treated as plural. और the number होगा, it will be treated as singular. So a number, दोनों में वही चीज होगी, यानी a number of students होगा, the number of students होगा. Structure वही होगा, जो difference होगा वो a number and the number में होगा. तो a number of students will be treated as plural. तो a number of students, the most suitable answer will be a number of students are absent today. So that's all of those 100 best
पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, और हर एरिया से मैंने कोशिश की है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करें और इसे आप फोकस करें। इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज की फर्दर प्रैक्टिस करें। गुड लक।